क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड दोस्तकास्ट के अंदर। मेरा नाम है मेरा नाम है विनम्र कसाना। व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स। मैं आज क्या करने वाला हूँ इन दिस वीडियो, वी आर गोना टॉक अबाउट, रादर इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोना टॉक अबाउट किस तरह से मेरे सारे के सारे जो स्पेनिश एडवेंचर्स हैं हम उनको पैकेज करके आपको सुना सकते हैं। एंड आई एम गोना ट्राई एंड पैकेज देम इन अ वे सो दैट इनमें से कुछ चीज़ें मुहावरे बन जाएं और कुछ चीज़ें सीख बन जाए, यानी कि लेसन्स। First things first, as you can obviously see, I'm dressed up nicely. If there are creases on my shirt, it's because I've been running around Barcelona like a madman doing adventures in this shirt and this pant that I bought from a fishing village in on the Costa Brava coast of Spain. एक खूबसूरत जगह है near the French border from a village called Cadaqués. वहाँ पे एक स्पेनिश हिप्पी औरत, जो ऐसे नहीं होते जो बुढ़े बुढ़िया बोलते हैं कि चल यार क्लोथिंग स्टोर खोल लेते हैं और कुछ तो है नहीं ज़िंदगी में, थोड़ी थोड़ी आती थी उनको इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी मुझे स्पेनिश आती थी। इस चक्कर में मैंने उनसे ये खूबसूरत लिनन के शर्ट ये ले लिए। अब बहुत सारे लोग मेरे घर के हैं जो लिनन के शौकीन है, बोलेंगे यार ये तो इंडिया से सिलवा लेते, बट यू नो व्हाट, देर है दुरुस्त है। मैंने एक चीज़ रियलाइज करी है, प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग आई वांट टू एड्रेस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ फकिंग फैशन सेंस। I love street style, don't get me wrong. मेरे को बहुत अच्छा लगता है cool, casual, comfortable कपड़े पहनना. And I think high fashion can also be comfortable. At the same time, I have to give it to the Spaniards, I have to give it to the Italians and the French. They know how to dress the fuck up. They dress up still. I think they're probably the only last living descendants of the high fashion gents and women of 1800s, 1900s. जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक एवरेज न्यूयॉर्कर देखते हैं हम 1945 का और सब लोगों ने सूट पहन रखा होता है, राइट? देयर इज अ लिटिल पनाश, देयर इज अ लिटिल स्टाइल, देयर इज अ लिटिल यूनिफॉर्मिटी ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन जेंटलमैन और अ वुमन फ्रॉम दैट एरा, उनके फैशन से। आई थिंक आई वांट टू ब्रिंग दैट द फक बैक। सो फुल डिस्क्लेमर, फुल अनाउंसमेंट, आई एम थ्रोइंग आउट ऑल माई शिटी एज वार्डरोब। जो भी एक कूल लूज टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, दैट्स ऑल फाइन, लाइक मे बी आई वेयर अ फ्यू हियर एंड देयर, बट आई एम ब्रिंगिंग बैक फकिंग अमेजिंग शर्ट्स। मैं लेके आ रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया पैंट्स। इट्स फकिंग फैशन रेनेसांस इन द दोस्तकास्ट हाउस। लेट्स फकिंग गो, बिकॉज यू फील लाइक $100 वेयरिंग गुड क्लोथ्स। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, यू नो, यूज दैट फकिंग ओल्ड मीम लाइक हम पे पैसे नहीं है, आप तो अमीरों के चोचले कर रहे हो। सो सिक ऑफ दिस शिट। Honestly, it doesn't cost that much and it makes a huge difference in how you feel, how you behave, all of that. मुझे अब, as time goes on, I feel like, you know, ऐसी casual जो यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है ना, all of that is very pedestrian, very boring, very wrought with stupid, insignificant insignia and logos and meanings that no one gives a fuck about, right? So I think you should invest in nice clothes. These are not the nicest clothes, but they're definitely a start. They look crumpled because I've been running around like a madman, like I already told you. But goddamn, it doesn't make a difference. Does it seriously help you stand out in your own eyes and in the eyes of the world that you're someone who commits to a uniform and wears it, right? ये नहीं है कि मतलब अब you wearing like a nice linen shirt and then a nice linen pants and then you're like, नहीं sneakers पहन लेता हूँ नीचे से. No, kurta and jeans and sneakers. Commit to the outfit entirely. That is one thing I learned from Donald Trump in his book. Get to the, नहीं, that's Suhail said. No, he's got a book, मैं भूल रहा हूँ कौन सी book है Donald Trump की, but उसके अंदर he said, listen, in my profession, if I'm a real estate guy, I have to dress the part. That means committing to a conservative suit and sticking to it. कुछ लोगों के लिए चल जाता है, but they have to be exceptionally top-notch in what they do and get away with it while, you know, like being like Rakesh Jhunjhunwala, right? जिसकी shirt पे crimples आ रहे थे और वो नरेंद्र मोदी से मिला था, like stuff like that. But that is probably the first takeaway. Is I've realized how essential fashion is because I don't like looking like a tourist anymore. I think I've been in Barcelona for the last 2 weeks और मैं स्पेन में अब पिछले 1 महीना होने वाला है मेरे को. And I think it's just, I mean, I'm done with the act. I would like to in the future also travel as sophisticatedly as possible when it comes to fashion, primarily because it's the single distinguishing factor that helps you belong in certain places and helps you, you know, get into certain places जहाँ पे आप बिल्कुल ना जा पाते, because it's all about signaling, right? So this signaling, all of these things, which many might consider कि क्या पहन vanity metric है. I think it makes perfect sense. I see why, you know, 2 classes of gents in my city, Faridabad, where I'm from, is like, एक ऐसा होता है, there is a standard youth uniform that most of my friends and I wear all the time. T-shirt, knicker, चप्पल, उसमें ही बंदों के लाखों करोड़ों के business चल रहे हैं. But it's just this कमिटमेंट टू सीइंग कि यार बाकी सारे 26 साल के, 24 साल के, 30 साल के, 29 साल के बंदे क्या पहन रहे हैं, आई वेयर दैट, राइट?
Then there is the other type of gent, usually an older gent, या फिर ऐसा बंदा जो सेकंड जनरेशन फैमिली के अंदर बिजनेस वगैरह रन कर रहा है, जिसको 9 बजे 10 बजे फैक्ट्री पहुंचना पड़ता है. Whatever it is, I mean, the dude might not have the best sense, but at least he's dressed up in a nice shirt or nice jeans, and like with his loafers, whatever, right? उसकी जो Gucci की belt जो भी पहनते हैं, fake or otherwise, that's not the point. Commits the fuck up, shows the fuck up, wakes up early, and looks like he belongs in a place and he has things to do. And I think I would like to change that approach for myself as well, because living and traveling here and around Spain, I noticed that even in the beach towns, कुछ लोगों की जो shorts होती है ना, even those are dress shorts, right? And I mean, there's no problem wearing a Nike short if you're running or whatever, but everything I've done so far on this trip is a constant reminder to level up, because the world is a big place, and India, while it looks like it's a big place, it really is not, because mentally India का जो क्या बोलेंगे उसको, जो social fabric है, आप उसको अगर आप मेरे जैसे आप podcast वगैरह करते हैं, you can map it very quickly, right? So it's just one of those things. Another thing is, my God, मैं अभी इस टाइम पे इतनी बढ़िया कॉफ़ी पी रहा हूँ, this Nespresso coffee that is tasty as fuck. I never thought मशीन से इतनी बढ़िया कॉफ़ी बनेगी. बढ़िया सा पॉट उसके अंदर डाला, पॉट अंदर घुसता है, ज्वालामुखी की तरह उसे सक कर लेता है, और उसके बाद उसके अंदर से आती है रसीली काली काली कॉफ़ी. इतना कप भरता है, उसके ऊपर आप फिर पानी भरते हो और आप बोलते हो वाह. दुनिया में ना बहनचोद अगर आदमी को कॉफ़ी मिल जाए ना, वो कुछ भी कर सकता है. आई थिंक who is it that said it? I think it was Michael Pollan who said that we are a world on caffeine dealing with a world that was built on caffeine, right? Something like that. कितनी crazy बात नहीं है. आप लोगों को बोलते हो बहनचोद ले कॉफ़ी पी काम कर, चाय पी काम कर. It's so amazing that this is legal, that this drug is actually legal and available and monetized and productized. In fact, मेरे यहाँ पे just off the camera, let me just show it to you actually. I think you'll like it. So, as you know, if you are a coffee person, it's very evident that wherever you go in the world, you will find a specialty coffee shop, जहाँ पे लोग usually English बोलते हैं, mostly run by hipsters, जो नाक में वो धतूने पहन रखे होते हैं. Not trying to be like stereotypical, I'm just saying it as it is, right? Vice documentary, barista, वो happy जो intersection बनता है, that is exactly the kind of people you meet in these coffee shops. But the coffees are spectacular. Now they do. अब वो दो चीज़ें करते हैं. Number one, the branding has to be top notch. Like this is a toucan coffee from something called Nica. It is from Nicaragua, the country Nicaragua. And it just looks cool, right? So मैंने इसे खरीदा because मैंने इसका taste वगैरह पढ़ा. It's honestly made sense. मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, whatever. But and now in Barcelona, and यहाँ पे भी specialty coffee shops. In fact, yesterday my friend Paritosh and I, हम लोग एक जगह पे गए, सायरा coffee shop. वहाँ पे 22 यूरो की खूबसूरत कॉफ़ीज मिल रही थी, जो पेरू से है, कोलंबिया से, कहाँ से है. There is a real hunger, there is a real passion, there is real money in this industry. And मैंने इस पे ये लगा रखा है because ये खुल गई थी सारी की सारी. I'm using a clothesline clip on this coffee to ensure that it stays locked up. What was I saying? So coffee, right? So I'm having this coffee this morning, and अगर बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही है, साफ़ सफाई करने की आवाज़ आ रही है, तो excuse me, mind you, that is because I'm staying in this, how do I say, एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ for the next few days in the beautiful neighborhood of Gracia and Sarria. इसके right in the middle, बार्सिलोना के थ्रू एक लाइन काटते हुए जाती है डायगनल नाम से, obvious. And उसके बीच में दो अच्छे खूबसूरत अपस्केल नेबरहुड्स हैं, सबर्बन नेबरहुड्स भी हैं. यहाँ के अमीर लोग रहते हैं, यहाँ के establishments में जाते हैं, all of that jazz. Anyway, I'm staying here for a while, so excuse it if you hear any noises, whatever. Anyway, so what the fuck am I doing in Barcelona? Let me just get into that. Last time लोगों ने बात करी थी. You saw me in Madrid, where I was telling you about my intentions for coming to Spain. I was talking to you about कि यार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे को स्पेनिश सीखनी है, मेरे को एक I had like this weird fixation with this country, and now I'm here, what do I do, yada yada yada, all of that. उस time पे I was in an Airbnb in a penthouse loft in Madrid. Now I'm here. So many things have transpired ever since, because largely इसके पहले 2 podcast episodes हुए थे जहाँ पे you saw me and Tanya Khanijo talk about it. She lost her luggage in Italy, which is, you can follow it on her stories. Very interesting journey of what her and her fiance went through. And then me and my friend Paritosh, who I honestly reconnected with probably after 10 years, right? 10 साल के बाद मैं उससे मिला यहाँ पे आके, and him and I have caused mayhem on the streets of Barcelona. Maybe like at the end of the podcast I'll do exactly, मैं बताऊँगा exactly हम लोगों ने क्या तबाही मचाई है यहाँ पे.
तो ये सब हुआ था and we haven't really connected. Now what I've been doing in the past is I have been putting out community posts जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ. I love writing. I just think the way, you know, if you're in a flow, it doesn't matter तुमने दारू पी रखी है, you've just been talking to a lot of people, you've had a good run, you know, you've had coffee, whatever it is. अगर अच्छा flow है ना, earlier I used to say कि नहीं अपने first draft कभी मत post करो, but god damn it, if you've got spontaneity flowing out of your fingers, just post that dump. It's glorious to witness, especially in a time when हर कोई इंसान chat GPT को use कर रहा है, which brings me to something I didn't want to address, but I will now. A lot of the comments in the community posts are saying कि बहनचोद इस बंदे ने chat GPT use कर रहा है, हमें क्यों बता रहा है? Motherfuckers, मैं बहनचोद दुनिया भर में travel कर रहा हूँ. So many crazy things are happening to me. If you are my audience, I naturally want to share it with you. If you don't want to watch it, don't watch it. I don't give a fuck. लेकिन whoever said कि chat GPT use करा, I will say personally, dude, मेरी टीम यूज़ करती होगी शायद डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी या अदर चीज़ों के लिए मेरी टीम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती होगी. लेकिन मैं आज भी आई राइट ऑल माई ओन ट्वीट्स, आई राइट ऑल माई ओन पोस्ट्स एंड आई नेवर यूज चैट जीपीटी. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सम ओल्ड प्योरिस्ट गाय कि यू नो पेपर ही बेटर है, भैंसो डिजिटल बेकार है. नो, आई थिंक द वे थिंग्स आर वर्किंग एंड मेरी टीम ने मेरे चैट जीपीटी के मॉडल को मेरे राइटिंग के स्टाइल में ट्रेन कर रखा है for writing our YouTube titles and descriptions. How successful that is is evident by the fact that no one bats an eye and talks about कि ये title घटिया था, ये description घटिया था. It generally seems to be working, but I will say that I love writing. I generally think दुनिया इतनी खूबसूरत है और आपके साथ जो घटनाएं घटती हैं आपके मन में अगर वो बैठी हैं और आपने उनको कलम के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीन या पन्ने पर नहीं उतारा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. बिकॉज समय बीत जाएगा और आपके पास कोई आर्काइव नहीं होगी अपने ख्यालों की कि 2019 के 8 जनवरी को मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मैं क्या सोच रहा था. क्या मैं सोच रहा था कि यार मैंने क्या करा है, मैंने कुछ उखाड़ा है नहीं उखाड़ा. क्या मैं उस टाइम पे बॉस्टन में बैठ के सोच रहा था 6 महीने बचे हैं, मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी रहेगी मेरी ज़िंदगी. क्या मैं सोच रहा था यार डैम मैं सिर्फ काले कपड़े पहनता हूँ, मेरा स्टीव जॉब जरा क्या चूतिया चल रहा है. क्या मैं सोचता वाह यार रिलीजन क्लास कितनी कमाल है, काश 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 मेरे को भगवान दिखी जाए, मज़े आ जाए. या मैं सोचता था डैम ब्रो अब इंडिया जाके कौन सी फॉरेन बंदी मिलेगी. ये सब ख्याल चल रहे होंगे, आई डोंट नो राइट. लाइक बट I can always go to my journals and see exactly what I was thinking. मेरा क्या, was I going through like a black period? Was I going through a funky period? Was I going through like an optimistic period? That is the gift, the importance of journaling, right? Of writing. And that is why I think if you're a public figure, you should fucking write and share your writing with the world. कितनी बार ये आदमी spontaneously video में इस तरह से बात करेगा, right? It's just the way language flows through you on paper. It's a little bit more sophisticated. You have more time to formulate your thoughts and add flavor to the sentences, because in real time when you're speaking there is a lot of burnt tongue that happens. For example, I'll start with saying something but then arrive at something completely different, right? Which is the nature of conversation as well. Like when you speak, what tends to happen is हम बोलते हैं हाँ पर मैं कह रहा था blah 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 blah, and we never sort of have a very linear dry conversation. There are so many twists and turns that we follow. In writing, a lot of that gets solved because you're literally just allowing each sentence to be beautifully constructed one after the other. And you know, we can get into a whole debate about like beauty versus simplicity, because in the past I used to espouse simplicity after having read the likes of David Perel and everyone else who now say कि यार GPT आ गया, now voice experience and beauty will matter far more than मैंने अर्नेस्ट हेमिंगवे की तरह या फिर मैंने जस्टिन वेल्च की तरह नवल की तरह क्लियर कंसाइज ट्वीट लिख ली. दैट मैटर्स फॉर श्योर. आई थिंक दैट्स द बेड रॉक. बट दैट होल फायर ऑफ यू नो there's a fucking dragon inside you that just like I just want to speak, your creative potential वो निकलता है, वो अजीब गरीब sentences में ही निकलता है. I don't know how to explain it. It's just there's so much chi inside you, there's so much energy inside you, then the best way to express it, if you can, is through writing, because it not only sharpens your intellect, it also forces you to find new words for the things you abstractly feel. And जब आपको वो नए शब्द मिलते हैं ना उन चीज़ों को abstractly feel करने के लिए, you become a word collector. From a word collector, you realize some of the words are redundant, so you remove them. Then you become a sentence collector. Then you become a phrase collector. Eventually, you can use entire slices of life as fodder for your writing. And then it's a feedback. And then if you feel like 4-5, then you know you've sort of drifted away from your personality, from yourself. Aapne, you know, one of those things where like you look at the mirror and it's like, I fucked up. I haven't had a conversation with myself in a while. That is the way to have a conversation with yourself. आप बैठो और लिखो और आप अपने आप को मिल जाओगे.
कि मैं ये हूँ, मेरी ये कहानी है, मेरी ये जर्नी है, मैं अभी ये कर रहा हूँ इस टाइम पे ज़िंदगी में, मेरे साथ ये चल रहा है और मुझे यहाँ जाना है. All of that makes sense when you write, right? And I am saying this, all of this, even after, barely touching the notebook in the last few weeks. I think I've been able to write maybe twice per week or thrice per week uske baad bhi. And I think it makes more sense because you're in a new country, in a new place with new people. So the contextualization has also has to be rapid. Which brings me, okay, so हमने writing cover कर ली, right? Let's talk about language now because I think this is a good flow and I'm on a flow तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ. I was very hesitant about picking up Spanish and I almost had lost hope in Madrid because मैंने realized करा भैंचो कौन सीखेगा, ठीक है? Where is a conversational partner? What the fuck will I do? I had honestly given up and I was considering Madrid, एक हफ्ता, Barcelona, 3-4 दिन देख लिया टूरिस्टी तरीके से, and then Prague. Khatam, because when you have like money saved up, you're like, okay, new, fresh story. I want a new start. Spain, bad dream, whatever, all of that. Now here we are, 3 weeks later, 2 weeks later, and I'm still in Barcelona. What changed? It was the language. I figured out a way to learn languages, which I think is very well known, but it's not so well known कि लोग उसको intuitively follow करते हैं. When you think about language learning, what's the first thing that comes to your head? कि यार मेरे को language learning school जाना पड़ेगा? Boring. Second thing is probably YouTube videos, right? A third thing is the language hacking book that I was espousing a few weeks ago. Good for building a script, by the way. But the best way is, abhi recently मेरे को अर्चित पुरी ने tag करा था Twitter पे, and he said that, it was basically something Nassim Nicholas Taleb had posted where he said that if you want to learn a language, there are two ways. One, you learn the grammar, the rules, etc., like a chump, and then wait and improve, but you really don't improve. The other way is कि आप एक जगह पे जाओ, एक बार के अंदर जहाँ पे सारे के सारे लोग जिस फ्रेंडली ग्रुप का आप भी हिस्सा हो, वहाँ पे सब डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. And because of contextual cues, because of feeling left out, you sort of pick it up and learn faster. That is exactly what I've done. No, I haven't been to bars. In fact, I haven't been drinking at all. I have been on a streak of just living life, just raw dogging reality as it is. But what I've done instead is I've started with restaurants and cafes, right? And picking up basic phrases. So, okay, let's say I'm going usually by myself because I'm solo traveling. Now I meet friends here and there, make friends here and there. So वो छोटे-छोटे pockets of companionship बन जाते हैं. Sometimes, half a day, sometimes 2 days, sometimes 3 days, sometimes just, back to me again. So Mesa para uno is a table for one. Now, why it's simple is because मैं Google Translate पे गया, मैंने कहा मेरे को, this is a sentence I'm going to use frequently, so why not make comfort with it? Why always go and say कि table for one and be the one English foreigner sticking out again and again, especially in places जहाँ पे, Barcelona or Madrid जैसी बड़े-बड़े शहर ठीक है, but as you go further towards the coasts, the propensity for people to understand English and speak English dies down. So actually मेरी जो language learning है, it really picked up in the last week when I was in Caracas, this fishing village that I'm talking about. So Mesa para uno से अब क्या होता है, and I speak it, my pronunciation is near perfect. That's what all मेरे को लोगों ने बोला ऐसा. And it is also the case, sample size of 2 or 3. जिन लोगों की second language English होती है और वो third language pick up करते हैं, I think अगर वो romance language है तो शायद ऐसा हो जाता है. Again, scratch that. I'm not sure if this is a complete hypothesis yet. I will find out when I speak to other people who are learning a third language, right? So first language English, second language English, third language Spanish. Okay. So what I do is I go to Caracas and I'm like Mesa para uno, तो वो reply करते हैं उस तरफ point करके जो भी वो कि वाले कि यहाँ बैठ जाओ, okay, ठीक है, वाले is okay, वहाँ बैठ गए, solid. अच्छा, अब मेरे को चाहिए menu. So menu is carta. तो मैं बोलूँगा carta, por favor is please. मैं इनकी स्पेलिंग्स नहीं देख रहा हूँ, मैं इनके डीप मतलब में नहीं जा रहा हूँ. राइट नाउ आई वॉन्ट टू यूज द फ्रेजेस दैट विल अलाउ मी, नंबर 1, टू कम्युनिकेट विद द सर्वर हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नंबर 2, टू फुलफिल माई ऑब्जेक्टिव. मेरे को बैठ के खाना खाना है, उसके लिए मेरे को टेबल चाहिए पहले, फिर मेरे को मेन्यू चाहिए, राइट. नाउ सेकेंड इज quiero इज आई वॉन्ट, ठीक है. अब क्या है कि now you can do 2 things. It's sometimes very difficult to read the menu items as they are because अगर वहाँ लिखा होगा पताता बरावास और 4-5 चीज़ें लिखी हों, which is, I think potato omelette, something like that. I'm not sure. Oh, sorry, whoever's is eggs. Anyway, all over the place. So what do I do then?
So then I need quiero, अगर उस मेन्यू में लिखा हुआ है ना numbers, it makes it easier. So I say quiero número siete, seven, e, which is why, e is and, quiero número siete, e número cuatro, e un agua. मैंने बोला है मेरे को चाहिए नंबर 7, नंबर 4 और एक पानी. ठीक है, सॉलिड. वीनो, उसने मेरे से पूछा, वन ऑफ द सर्वर्स आस्क्ड मी, वीनो लाइक डू यू वांट द वाइन लिस्ट. अच्छा, मैंने अब कहीं ना कहीं बोर्ड्स पे पढ़ा था कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन कॉस थीटा, इस तरह से बात करते हैं, या तो लैटिन में या कहीं पे. अगेन दिस इज़ ऑल कंजेक्चरल, दिस इज़ ऑल प्रैक्टिस्ड, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है. आई फिगर्ड जैसे हम बोलते हैं सैंस सेरिफ, और मतलब फॉन्ट की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं सैंस सेरिफ, एज इन फॉन्ट्स के अंदर बिना उस स्टाइलाइजेशन के एट द एंड ऑफ द फॉन्ट. इसी तरह से यहाँ बोलते हैं सीन, सीन, राइट. सो सीन मीन्स विदाउट. सो अब किसी ने मेरे को बोला वीनो की लिस्ट, तो मैंने उसको बोला सीन वीनो विदाउट वीनो, विच इज़ टेक्निकली इनएक्यूरेट, बिकॉज कोई मेरे को बोलेगा आपको वाइन की लिस्ट चाहिए, मैं बोलूँगा विदाउट वाइन. But that's the wonderful part about just trying to speak the language from the get-go instead of trying to like sit in a room and try to understand the language. उसको समझ में आ गया, right? It's the same as कि कोई foreigner आके आपको बोले कि मुझको मुंबई जाना, मुझको मुंबई खाना, ऐसे basic Tarzan retarded तरीके से बोले, आप समझ जाते हो, right? Because this is your first language. And you're trained to pick up far more nuanced, high-level, complex sentences to the point कि आप literally उस language में literature consume कर सकते हो, which is like, you know, tougher to get through. So this is not even grade 1 English. This is like toddler English or like toddler Spanish, right? तो मैं in a virtue I'm speaking either Tarzan Spanish or toddler Spanish. So it's easier. So वो समझ गई. Now, great. Now, what else? Having the food, I can say excelente, which is like great food, बढ़िया. Food का मतलब होता है comidar. You know, come is eat, bebe is drink. So bebidas is drinks and beverages, and comidar is food. So I can say excelente comidar. And मैं उसको जितने conviction, जितने passion से बोलूँगा, वो बोलेंगे oh gracias, gracias, भाई अच्छी बात है, वो खाना पसंद आ रहा है. Finally, okay, so now I want to get the bill and I'm going to pay by card, right? So मेरे पास एक contactless forex currency card है. So what do? So then I go and say quiero pagar con tarjeta. Now मैंने ये सीखा है, दिस इज समथिंग आई पिक्ड अप थ्रू गूगल ट्रांसलेट, कि quiero मेरे को पता है, तारहेता मेरे को पता है, बिकॉज जहाँ पे भी जाता हूँ मैं, आई एम अ फॉरनर इन दिस कंट्री, मैं हर जगह पे ही तो कर रहा हूँ, मैं कमा थोड़ी रहा हूँ, कमा मैं इंटरनेट के थ्रू रहा हूँ, बट दैट इज हैपनिंग इन INR राइट नाउ, राइट. सो आई एम यूजिंग द तारहेता, द कार्ड अ लॉट, और वो कार्ड मशीन के अंदर लिखा आता है एस्पेरे por favor, प्लीज वेट. A side note, because you know English, you can infer a lot of Spanish. And I mean, when I say lot, I mean like 60-70%. ठीक है, बहुत सारे अब नहीं कर सकते because of the things you don't know, but if you spend time and you observe, you can pick a lot of it. Espere por favor, espere por favor, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ना कार्ड मशीन. You go back and think, where else does this happen? जब मैं कभी कार्ड की पेमेंट करता हूँ दिल्ली में या किसी और पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो जब हम पेमेंट कर देते हैं, वहाँ पे जो वो होता है, वो लिखा आता है प्लीज़ वेट या सेंडिंग मैसेज, ऑल ऑफ दैट, राइट. सो दैट्स इट. ऑपरेशन एक्सेप्टदा ऐसे लिखा आता है, कि मतलब ऑपरेशन एक्सेप्टेड, हमारे में लिखा आता है पेमेंट कन्फर्म, वट एवर इट इज़, राइट. इट्स फेयरली ईजी टू कन्फर्म. सो ऐसे quiero pagar con tarjeta, pagar is money, right. Con tarjeta is like I want pagar to pay with con tarjeta, with card, right, something like that. And I was like, oh, see, okay, ठीक है, yes, 2 कार्ड दिया, बढ़िया है. फिर मैं बोलता हूँ mucho gracias, much thanks, hasta la vista, और मैं बोलूँगा adios, कुछ भी बोल सकता हूँ, hasta la bueno, बहुत सारी चीज़ें हैं. And I bounce, right. If I don't bounce, what I do instead is मैं उस server पे जाता हूँ. And I've done this at least at 4 or 5 places now to, मतलब I've mastered restaurant English, restaurant Spanish, restaurant server Spanish. Then I go and say कि मैं, I say estoy या soy, doesn't matter. मतलब वो बोलते हैं estoy बोलो, but I figured soy का मतलब होता है I. So again, embrace Tarzan Spanish, makes life easier. Soy aprendiendo español. I am learning Spanish. अब मैं बोल सकता हूँ I am still learning Spanish by the way. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं लैंग्वेज पहली बार सीख रहा हूँ. I just gotta use the basics, ठीक है. I don't want to be Shakespeare or Miguel Cervantes. So मैं बोलता हूँ soy
so aprendiendo español. Ab I now switch to English and say, how did I do? What can I do better? Ab, you know what? At this point, what has happened is, throughout this whole time, this person has spoken to me in perfect Spanish as they've seen कि मैं as a foreigner clearly attempt कर रहा हूँ to speak in Spanish. Now, first of all, the number of favors I get, the number of smiles I get, the special preferential treatment I get because I am practicing Spanish in a country that is fiercely protective of its identity is next to godly. ठीक है? तब मैं उनसे पूछता हूँ कि what can I do better? तो वो कुछ फिर now if the server is free, if the restaurant owner is free, it allows me a time to have a 5 to 10 minute conversation with them about their life, about words I can improve. वो फिर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइसक्रीम की जगह पे आइसक्रीम खा रहा था एंड मैंने फिर 3-4 चीज़ें पूछी एंड देन मैंने बोला कि मेरी स्पेनिश कैसी थी. उसने कहा बढ़िया. उसने बोला वैसे हम कातलोनियन हैं, हम यहाँ पे हमें कातला बोलते हैं. एक ऑटोनमस रीजन है, बार्सिलोना उसका कैपिटल है, स्टेट है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा. ये लोग अपने अलग राइट्स चाहते हैं कि हमें अपना अलग ऑटोनमस और ज़्यादा होने दो, सेपरेट कर दो. सो कस्तिलियन स्पेनिश होती है एक डिफरेंट जो सब लोग बोलते हैं एंड देन देयर इज कातलोनियन which is a different language altogether. जैसे अब कल को गुजर बोलना शुरू करते हैं, भाई गुजरी अलग लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाए एज अपोज टू अ डायलेक्ट, राइट? सो सब कुछ लोग बोलते हैं कि ये डायलेक्ट ही है लेकिन नहीं बोलते हैं अपनी लैंग्वेज. अब छोड़ो, मेरे को क्या पढ़ना है इसके अंदर, हम तो भाई कॉफ़ी पी रहे हैं अपनी, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दिस आई कैन स्पीक विद दीज पीपल एंड देन दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते हैं. फिर वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं कि इसके लिए ये वर्ड है, इसके लिए ये वर्ड है, इसको ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है. इन दोज 10 minutes मेरी लर्निंग कहाँ सही है, सीमेंट हुई है, ठीक है? मेरे को फीडबैक मिला है मैं कहाँ गलत हूँ एंड आई गॉट न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट? एज लॉन्ग एज आई ईट आउट I can do this again and again and again. As long as I speak on the phone, I can do this again and again and again. And as long as I am out and about, saying hello to strangers. So if I want to say hi to a woman, I'll say, hola, hola, un hermosa, which is like, hello, you are beautiful. So to wo bolegi, gracias, hasegi, whatever it is, right? Which is something I've done a lot here. You can just speak with people and learn the language. So मुझे लगता है कि the books and the language schools are all nice if you want to learn the snail space. But if you have the balls and if you have the courage and if you're okay to embrace Tarzan, Spanish, Tarzan, whatever language you're learning, this is the way to go forward. By the way, this is true for English also. आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो constantly comment करते हैं नीचे कि आप भैंचो अपने podcast को इंग्लिश में क्यों बनाते हो, हिंदी में क्यों नहीं बनाते. भाई क्या करें यार, हमने भैंचो नहीं करे तो चैनल सेपरेट, भैंचो जान लोगे हमारी. हमें लगा भाई एक है, हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलेंगे, और हम इंग्लिश बोलते हैं, व्हाट्स द अदर वर्ड, लाइक हम हिंदी बोलते हैं तो हमने मिक्स कर दिए, ठीक है? जो बंदा हिंदी में कंफर्टेबल हो उसे हिंदी में पॉडकास्ट कर लेते हैं. कई बार नेचुरली इंग्लिश आ जाती है. तो जिन लोगों को इंग्लिश से भी दिक्कत होती है ना, लाइक द वे टू लर्न इंग्लिश, राइट, इज जस्ट थ्रू दिस मेथड. यू गो टू प्लेसेस वेयर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, आप ये टूटे फूटे फ्रेजेस ट्राई करते रहो एंड यू विल गेट कॉन्टेक्स्ट. एंड मोस्ट पीपल आर रियली नाइस. इफ यू एक्चुअली गो इन, लाइक द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी बहन जो स्टूडेंट से उल्टा नहीं बोलता. एंड यू नो हाउ डू यू सिग्निफाई दैट यूर अ स्टूडेंट? हाउ डू यू सिम्बलाइज दैट इन योर इंटरेक्शन? यू से आई एम लर्निंग, राइट? मेरे को स्टूडेंट का वर्ड नहीं पता स्पेनिश में. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द स्पेनिश लैंग्वेज, राइट? लाइक जस्ट टू सीमेंट दैट. यू कैन डू द सेम विद इंग्लिश, यू कैन डू द सेम विद हिंदी. आप किसी भी लैंग्वेज से ये चीज़ कर सकते हो. एंड आई थिंक इफ यू आर आउट एंड अबाउट, the best place to learn is through patient waiters and servers. The second is through Spanish friends, which brings me to my next point. So, in Barcelona, what the fuck am I doing? In Barcelona, I'm going out every single day, not drinking at all, not a drop of drink, and just meeting the most amazing, beautiful women that, man, भाई स्पेन की औरतें कसम से बहुत खूबसूरत हैं. And so receiving, so warm, so welcoming. I have genuinely seen parts of me completely shift from this angry, nihilistic, pessimistic, dense, ऐसी दुखी फंसी हुई एनर्जी, बहन चोद ये काम करना है, fuck यार बहन चो यार कब फ्री होंगे, खुजली करते हैं बहन, यार बहन कलंडे ये घटिया है. I haven't had a time to bitch about circumstances at all for
a long time now. And that's primarily because one, the weather is excellent. Second, I think one of the wonderful things that world travel or foreign travel does to you is it forces you to come out of your confines. जिस तरह के आपके पुराने रूटीन्स होते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी अपने रोल्स में जिस तरह से जाके फ्रीज हो जाती है, राइट, इट कैन कॉज यू टू permanently lose the joy of being alive, the gift of being alive. आप भूल जाते हो, आप अपने जिम्मेदारियों में इतना फंस जाते हो, या आप अपने आप को इतना ज़्यादा डेलिबरेटली सेल्फ फ्लैजुलेट करते हो, इतना टॉर्चर करते हो कि नहीं नहीं मैं तो मज़े नहीं कर सकता, मुझे तो काम करना है. ओह इसने सैटरडे को भी मज़े कर लिए, संडे को भी कर लिए, ये चूतिए तो वीकेंड के लिए जीते हैं, मुझे देखो मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ. ओ वाह, सैक्रिफाइस करके ही सब कुछ बिल्ड होता है. ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या बिल्ड कर लिया, देखो देखो मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, देखो मुझसे कोई बात नहीं करता, बट देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ. मादर चोद, ये कोई ज़िंदगी है जीने की? इफ दिस वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द स्पेनिश इज लाइक, ब्रो आपके पास एक ज़िंदगी है, करो भाई, पूरा दबा के डिलीट ग्रेटिफिकेशन करो, बनो बहनचो विश्व गुरु, सब बढ़िया करो. But if the sun is shining and the world is beckoning you and there are beautiful people all around and there's good music and there's nature around you, why not engage with it? Why be on your phone? I'm saying this to you as someone who's, I would say, a semi-expert in digital reality, clearly, because, you know, we've gained this audience and, you know, we do all our bidding online. It's far more easy to master the digital world now than it is to master the physical world. बड़ा आसान है जाके बाहर बैठो और बोलो कि हा हा हु ही प्रैंक वीडियो, या फिर हा हा हु ही पॉडकास्ट, या फिर हा हा हु ही कि देखो मेरी गांड देखो, and you get success. But then at the end of the day, you're still in a room by yourself, wondering why you have no friends, why your physical reality is not in your grasp. Why, like, I think one of the, सबसे weirdly enough, now that I think about it, the best, सबसे crazy जो masters होते हैं ना physical reality के, is people who buy real estate. Because they literally feel like, जो मेरे को सामने दिख रहा है, ये है 2 एकड़, मेरा हो गया. आप खरीदते रहो बेंच मेटावर्स में, फार्म बनाते रहो अपने फार्म वाले, no one gives a fuck. All this is great and it pumps and gives you insane money. I agree 100%. Not shitting on the internet. But there is an undeniable pull in the physical reality that you can just meld, bend, fabric a reality का उसको आप खेल सकते हो उससे. I sometimes feel you can get so powerful and so invincible when your creative force is welling up from the deep within your, you know, within the recesses of your heart, or jo bhi. It is coming from deep inside you. You can use that, channel it outside, and literally have sex with the world. Like literally fertilize the world. I mean, you know, you might think I'm fucking crazy. मैं क्या बोल रहा हूँ, man? What I mean is, in symbolic interpretations of individuation, Carl Jung का जो पूरा ये system scenario है, उसमें बोलता है कि the healthy masculine is someone who is literally fertilizing the world with his creative spirit, something like that, right? I once felt it, this exact feeling, when I was on some substances a while ago. But I think you can do it sober, and I think जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि the physical world is there to master. All it requires is the approach, which is the most primal instinct, is to go up to a person and say hi, is to go up to a person and strike a deal, is to go up to a person and say, hey, you look interesting, I think you work in X, I have Y to offer, let's connect. वो physical जो चीज़ है ना, it's going away. I love a good DM, like blah, 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 like, मैं सच बताऊँ, if people want to get in touch with me, if someone is in front of me and they're nice to talk to, I almost always end up doing business with them. Online कोई भी मेरे को reach out करता है, कितना भी अच्छा proposition हो, I just don't care. I just generally don't care. And I realize कि some of my best podcast guests have come never from, you know, cold DMs, not to dismiss, you know, that is not a vital necessary part of the process, but they've come from connections, referrals. So your physical presence matters a lot. And for those of us जो online content बनाते हैं, we tend to forget that. We tend to forget that there is a world out there that is yours to take and yours to grab. If you just wake up and get red-pilled. I think I'm so glad I got red-pilled when I was a fucking kid. Because all it took was to come back to myself after doing some work and realize you can always just break reality. जो annotate बात करता है ना, matrix क्या कर रहा है? वो तुम्हें red-pill कर रहा है. ठीक है? And there is nothing wrong with being red-pill. I think every man should get red-pilled once in their life to see what the other side feels like. Otherwise,
तुम्हारे मन में डिफ़ॉल्ट सिचुएशंस हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज हैं, और रियलिटी का साइज इतना नैरो है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते. You're fucked. You don't have a spectrum to borrow from. You're not dynamic. You can't free associate and think कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. आप पुर्जे इधर उधर नहीं कर सकते. आप खुद एक पुर्जे बन जाते हो और कोई और आपको चला रहा होता है. So I think that the being red-pilled in some way and understanding, like, psychology, understanding how the world works, how to make money, how to, become free, how to negotiate, how to build awesome relationships, how to speak with women, how to speak with men, how to figure out dating, all of these things. ये किसके बाल लगे हुए हैं यहाँ पे? All of these things are super important. And I'm only waking up to this because you know what? I'm just being super honest with you guys. मैं जब सिर्फ मिस्टर दोस्तकास्ट पॉडकास्टर की तरह काम कर रहा था ना, I noticed that all I cared about is like इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, and what? I was doing it often at the cost of personal growth and personal happiness. And ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, आदमी को sacrifice करना चाहिए, and I have no regrets. But I think moving forward, I will do it in a way which I get to enjoy my days, because I don't believe in this perpetual Indian narrative that we've slightly started to believe now कि भाई पूरी जिंदगी गांड मराओ, फिर एक दिन शायद मौज कर पाओ, और मौज करने में क्या, पी लो बढ़िया, सो जाओ. No, I think the world has far more to offer. So I would recommend, if you're watching this and if you're like, what the fuck, Dostcast ज्ञान क्यों चोद रहा है, भोसड़ी के दिखाना पुनीत सुपरस्टार, fuck off, go away, I don't want you. This is what I am in my life right now, and this is what I feel. This is me coming to you from Barcelona, speaking to you about the truths I've learned, and these truths are revelatory. You can see my state now. I'm not tired. I'm not dicking around. I'm like, I'm not making some dark jokes, right? Which are super funny, by the way, but nonetheless, they dismiss reality. They ultimately say that, I have to justify reality by making these absurdly pessimistic, cynical jokes because I get the last laugh, but then I laugh alone. So, Barcelona में ये हो रहा है कि बार्सिलोना इतनी खूबसूरत शहर है. It's so full, so alive with people, with I've just been going out. I've just been saying hi to everyone I can, striking conversations. And business is booming as a consequence. Because, आपको जितना काम करना होता है, आपको उतना ही काम करना चाहिए. अगर आप पे कुछ नहीं है, तो आप सैटरडे को भी काम करोगे. It's that simple. You gotta have something that's bigger than what you do for a living, so that work gets put into the right bracket that it deserves. More on this later as I expand on this hypothesis. Obviously, हम लोग अब internet business पे हैं. We're fully here, doing some online podcasts and some solo podcasts. And I see that, like, Indian podcasting is blowing up more than ever. And all our, peers, all my colleagues, everyone else is doing amazing podcasts in India right now, physically, 1:1. And I often think about कि यार, अच्छा, मेरे email पे, if I open my email right now, if I show you my email right now, the kind of guest requests I have are nation-breaking, nation-shaking. ऐसी requests आई हैं बस इस time पे. But they're all time-specific, time-constrained. I don't think I'm going to come back to India by, I think, till mid-October. So, it is what it is. And you have to realize that what game you want to play. And at this point, this is the game that I want to play in life. And I'm very excited that things are moving in a way which not only align with my material goals, but also my spiritual goals, what my soul wants. So I'm happy with that. And एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि for these days of solo travel, I've also met with Paritosh, जो last podcast पे आया था. Him and I have gone out a lot. He doesn't drink, very disciplined guy, and some of that rubbed off on me. And I decided, why use this time to have these very expensive cocktails, and be like a man of the world. Just in maybe हो सकता है future में जाके I redevelop a taste for cocktails. But I realized, what's the point? What's the point of sitting down and just having, sugar filled with a little bit of poison? What's the point? There was no point. So I figured, fuck it. Let's just use the natural born in extroversion that God has given us and use it to activate people and not be an NPC. Basic, right? Pretty simple. तो मैं और वो जाते हैं, जो हमें बढ़िया लगता है उससे बात करते हैं. We've just been having a blast running around Barcelona. We rented a yacht. Can you believe it? Yachts, I think, इतना बड़ा new money tackiness का symbol है. मैंने पैसे कमा लिए, मैंने ले लिया yacht. And old money
is yachts की specifications. कि मेरे पास तो बेसी 360 है, तेरे पास हुडसन 550 कैसे है, ये सब लौड़ा लसन. Some in the middle is people like me who are like, and yacht, अच्छा I guess अमीर लोग यही करते हैं, चलो हम भी करके देख लेते हैं क्या होता है. What's the big? It's super cool to be on a yacht, TBH. मैं full disclaimer, हम लोग बीच पे गए, start talking to a bunch of girls and said, listen, by the way, just have a yacht, throwing a little get together. 8 out of 10 girls. I'm just using like a proportion. That's not the actual number of girls we talked to, but like we talked to a bunch of girls. Almost everyone said yes, except for like maybe 1 or 2 who said I have classes tomorrow, I'm not available. तो उसमें को realize हुआ बहन आपको कुछ नहीं करना, आप दुबई का शेख भी नहीं बनना आपको, आप जाओ गोवा में जाके एक यॉट खरीदो, एक रेंट करो और बुला लो लोगों को. It made me realize such a fundamental part about people just want to be shaken up and woken up and taken away from the boring reality, right? And have fun, right? तभी ऐसी होता है, party promoters are like, the most sought after people because हर कोई चाहता है, I want a good party, I just want to have some fun. And those people are just programmed to give people fun. So, we met with these people and we had them on. It was fun. Living on a yacht is pretty cool. I also met with the yacht owner. जिसने स्टीरियोटाइपिकल बोट शूज़ पहन रखे थे, पिंक शर्ट पहन रखे थे, शॉर्ट्स पहन रखे थे. हमने पूछा भाई क्या रेट है यॉट का. कहता भाई मैंने ये लिया था आपका 400 में लिया था. हाँ, कह रहा मैंने लिया था ये 3.5 या 4 में, 400 के 40 लाख रुपए का यॉट था. मैं कहा 40 का ही यॉट था. मैं मेरा बहन जो हुआ करेगा 400-500 हुआ 5-6 करोड़ का. फिर मैंने सोचा ओहो, यॉट के आसपास हो रखी है बहुत तगड़ी ब्रांडिंग. यॉट्स के आसपास ना जनरली ऐसी ब्रांडिंग हो रखी है. और ये यॉट भी नहीं था, ये सुपर यॉट था. इमेजिन करो. कह रहा है पर मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है. श्योर ऑल ऑफ दैट इज़ ग्रेट फाइन, बट दैट्स इट. लाइक ऑब्जेक्टिवली अब 40 लाख की तो फॉर्च्यूनर हो जाएगी मेरे ख्याल से 1-2 साल में, अगर अभी तक नहीं हुई तो आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट ऑन द मार्केट टू परचेज कार्स. तो इट रियली शॉक्ड मी. बट देन इट ऑल्सो प्रूव्ड अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट समथिंग जो इमान गाजी ने बोला था अपने वीडियोज़ के अंदर कि when he goes on private jets, he often asks कि जो in private jet के owners हैं वो क्या business करते हैं. And the answer always is very boring businesses like trash or waste management or real estate. And I think it makes sense. I think you have to do a business that is not very glamorous on paper, but it makes you a lot of money. That is also something I'm considering, that, content is great. It's the best way to build distribution. Back end, behind the scenes, हर कोई मेरे को बोलता है, bro, हम कैसे distribution build कर सकते हैं, which is, what we do with our Business Pro podcast. So we help people scale their podcasts from 0 to 1, 10 to 100, 100 to 1,000. That's what we do. But everyone wants to build distribution. Weirdly enough, पता नहीं किसने, I think it was Devaya Bhopana who said that we are in this era where creators want to be businessmen and businessmen want to be creators. Interesting times, because now it's the perfect time to blend and collaborate. So I'm going to be in Barcelona for, I think, a few more days. I really like this city. I'm learning more Spanish than I thought I would. And then let's see. Now I'm thinking, should I want to spend all this time in Spain or maybe try out somewhere else? Because I think late September, I'm definitely heading to the UK to stay there for half a month. वहाँ पे हम दबा के podcast करेंगे with Indians abroad. See how that goes. I currently only have one camera. So maybe, actually, this is an open invitation. If you live in London, अगर आप एक इंडियन हो जो लंदन में रहते हो और आप दोस्तकास्ट देखते हो, I want a personal videographer for the next 15 days. So for the dates of September 25 से 26 से लेके, या September 27 मैं बता दूंगा, से लेके October 15 तक, I want someone good. I can give you my camera to shoot it. It's amazing if you have your own camera. I want you to shadow me. I will go to a bunch of places, meet with friends, meet with podcast guests. I want you to shoot all of this as a vlog style kind of situation. If this is you, you can send us an email at careers@dostcast.com. Please randomly मत apply करना. अगर आप लंदन में रहते हो और आपको ये काम करना आता है और आपको दोस्तकास्ट के साथ काम करने का मज़ा है, you want to see behind the scenes of how we do the podcast and how I run my life, how I run my content, how I make my money, क्या हमारी हवाबाजी चलती रहती है, all of that, please apply. I would love to be assisted because honestly, it's a little hard to just do all of this by yourself. So, yeah, I would really appreciate it. As far as other things are concerned, I think that's pretty much it. This is Vinamre from Dostcast. बढ़िया लग रहा है. It's a good feeling to be alive. It's a good feeling to be 26 and
fulfill a lifelong dream. Yeah, that's what I would say. And I'm very grateful to everyone in my life जिन्होंने मेरे को support करा इसके अंदर. And you guys, of course. And at the same time, I just want to thank me, Snoop Dogg की तरह, for showing up, for never taking it off. हाँ भाई, सच बात है. मतलब क्यों बने मुँह मियाँ मिट्ठू, लेकिन बनते भी हैं क्योंकि भाई करा है. I feel proud that wow, I never thought it would be possible to. एक तो साला बेंच ईगो आता है बीच में. I think the real game is like, you know, commanding your ego and beating it down like the bitch it is. मार बहन के लोड़े ईगो को. दिक्कत क्या होती है ना, ये अरे यार तुम तो यहाँ सारा कारोबार बना के बैठे हो, इतना अच्छा कर रहे, कैसे बाहर चले जाओगे? अरे 5-6 दिन के लिए जाते हैं फिर वापस आ. इतने लंबे समय के लिए कौन जाता, क्या होगा? एंड जो नेसेयर्स बाहर नहीं अपने मन में भी होते हैं. फाइट करो उसको दबा के, उसकी पेंसिल निकाल के शार्पनिंग कर दो उसके. बोल साढ़े रेड पिल हो रहा ना हो रहा, रेड पिल हो दी के मोर का. Anyway guys, this was Dostcast. बहुत मजे आए. टेक केयर. अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग, लोगों से मिलने के बारे में या फिर इन जनरल ये सब बातें बढ़िया लगी, एक बढ़िया से कमेंट छोड़ो, मेरे को बताओ वो क्या पसंद आया. मैं पढ़ रहा हूँ आजकल सारे के सारे कमेंट्स. And I want to know what you took away from this, right? If you want interview style podcasts, they will return. I will do some of them, of course, because we're doing those casts. But largely, I love doing these podcasts because I get to compress all of the things I've done in a small time frame. Another wonderful CTA for you is मैं एक किसी होटल में बैठा हुआ था, पता नहीं I don't know where the fuck I was in Caracas, और एक ना स्मेल आई एकदम पे. समवेयर इन द एयर आई स्मेल्ड ऊद एक चीज़ होती है, एक स्मेल होती है जो मैंने दिल्ली के 5 स्टार्स में जब हम जाते थे छोटे होते, फिर अब भी स्मेल करी उनकी लॉबीज़ के अंदर. सो आई रोट दिस होल स्पॉन्टेनियस पीस ऑन the decline of 5-star luxury and the sort of rise of Airbnbs and boutique hotels. And what a nostalgic सा piece है. It's about my childhood as a kid from Faridabad going to Delhi and like, oh भाई दिल्ली की बड़ी दुनिया, बड़े बड़े 5 stars, atriums, chaka-chaund, all of that. I wrote it from my heart. I think you will enjoy it. You can find it on my Twitter. It's one of my last tweets. नहीं होगा तो हम description में डाल देंगे. But yeah, this was Vinamre from Dostcast. And I will see you all in the next episode. Take care, my friends. Go be great. Bye-bye.